It also happen in case of CBSE. That is habitual. CBSE रे सेमती बहुत शीघ्र कोर्स सार दियंती स्कूलिंग रे CBSE अरे तमे 3-4 मास पुनी पिला घरे कोन करिवे ए कोर्स सारी सारलेनी टोटली बुक कवर अक्टोबर बेलू को बयस हो गलानी केंद्रीय विद्यालय और फास्ट जे पढ़ेला से दौड़ दौड़ी हालत खराब किंतु पिला माने रिजल्ट भलो करनाती अरे पिला को तो आदाय करिवनी ना हाउ पिले स्टे हंग्री स्टे फॉलिश you are the aspirants of modern science and technology unit number 2 or 3 3 very good ठीक है पिला आपण माने कोऑपरेट करंतु so students when there was certain type of a discussion you must be knowing about Steve Jobs in Stanford University and his life was divided into three parts. First part is relating to birth, second part is relating to love and loss, third part is relating to भाभी को death. So students, my third story is about death. When I was 17, I read a quote that you need to last. How some students are saying that we will have to the very important page number 101 in our life history. 101 page number so far as invitation 3 is concerned 2 is concerned and 101 last part. I am pretty sure none of this would have happened if I had not been fired from Apple. It was awful testing medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life hits you in the head with a brick. Don't lose faith. I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You have got to find what you love, and that is as true for your work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is of great work. Listen to me, students. I am pretty sure it is the conviction of Steve Jobs. I am pretty sure none of this would have happened. ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କିଛି ବି ସକ୍ସେସ୍ ଘଟି ପାରି ନଥାନ୍ତା if I had not been fired from Apple. Apple ରୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦୂରେଇ ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆମର if clause ବା conditional clause ର related question answer it is. ଆଉ ଥରେ repeat କରୁଛି I am pretty sure none of this would have happened if I had not been fired from Apple. It was awful testing medicine. So students, awful means very sad. Very sad to kuajaye awful. Testing medicine आम जीवन काल रे एमती गोटे गोटे आम पई पथ्य आसी पहुंचित है बट आई गेस द पेशेंट इंडीड नीडेड इट समस्त जीवन काल भितरे एमती गोटे गोटे असुविधा मुहूर्त आसी पहुंचबा दरकार. समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विथ ए ब्रिक. गोटे इटा रे बेले बेले कोन करिवो तम मुंडे रे के माड करिवो. दैट मींस occasional happenings would occur to you and you must have a tolerance or a patience. तमर टिके पेशेंस रहबा दरकार. Don't lose faith. That means don't abandon to despair. हतोत्साह केबे हो नाही. So I am convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You have got to find what you love. Okay, students. When we deserve anything else relating to our commitments, आम जीवन काल भितर जो कमिटमेंट गुडाक रही ताकू जो आम फुलफिलमेंट करने को चाहूँ से आम किसी ना किसी हडल्स आसी पहुंचब. That is our testing of life. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is of a great work. तुम ये दुनिया रे जोटा बड़ ता ऊपर तुम अधिका फोकस करिवो. जीवन काल भितरे आमे जो काम करिबा ता ऊपर हमर टिके लाइकिंगनेस रहिबा दरकार, अटैचमेंट रहिबा दरकार. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. That means you must have to maintain consistency, and consistency will help you to achieve success in life. As with all matters of the heart, you will know when you find it.
and I like any great relationship. It just gets better and better as years roll on. So keep looking until you find it. Don't settle. तमें जिते तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर जिते हार्ड टास्क थी तुमको से इजियर लगे जदि आम कंसिस्टेंसी मेंटेन न कले रेगुलारिटी मेंटेन न कले इट विल रिसेट अस एटा हमको कोन करबा हतोत्साह करैदबो स्टूडेंट्स my third story is about death that is the end of life when I was 17 I read a quote that went something like गोटे quote मु गोटे quotation पढ़ी according to Steve Jobs if you live each day as if it was your last someday you will most certainly be right तमे जदि प्रत्येक दिन को कंसीडर करिबो आज योर लास्ट डे और लास्ट पार्ट ऑफ योर डे देन एवरीथिंग वुड हैपन टू अस देखियो बहुत भल भल अचीवर माने भी कहते आम सब बेले कंसीडर करू दिस डे as our first and last day in life so we must have to be urgent we must have to insurgent to find out what to do at the time of exigency तेणु जदि आम जाना आज दिन आम लास्ट दिन चांस पाइबुन पढ़ाई आम कंसिस्टेंटली मिनिमम राति 2-3 जाए पढ़ा जदि आम कह ना आज दिन जाऊ आज किसी न पढ़ी ना काली सकाल पढ़ी पार कहीं वर्षाटा हो पाग भर ना आम दरकार पड़े विल रोल ऑन and the future will applaud us. So students, it made an impression on me and since then for the past 33 years, I have looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ମିରରକୁ ଦେଖେ ମିରର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ କରେ ଆମକୁ କଣ କି ପରଫେକ୍ଟ ଆଇଡିଆ ମିରର ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ଅନେଷ୍ଟି ଅନେଷ୍ଟ କାହିଁକି ସେ ଯୋଉଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ରିଏଲ ଆଣ୍ଡ ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ମିରର କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବନି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ମିରରକୁ ଦେଖେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହବ ଆଉ ଆଜି ଦିନକ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ ପରଫରମାନ୍ସ କରିବି ସୋ ଫାର ଆଜ ମାଇ ରୁଟିନ୍ ଟାସ୍କ ଇଜ କନସର୍ନ and whenever the answer has been no for too many days in a row I know I need to change something जदि मु चाहिए जे प्रकृत रे आज मोर लास्ट डे नाही ताले स्ट्रेटेजिकली मु सक्सेस पारे पहुंचवा पई आ मु किछि चेंजिंग पैटर्न फॉलो करिवि को चेंजिंग पैटर्न मु जीवन रे मु अचीवमेंट पाई परिबि remembering that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life because almost everything all external expectations all pride all fear of embarrassment or failure these things just fall away in the face of death living only what is truly important remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose listen students आम जीवन काल भितर आम जो गोटे अचीवर हो जाऊ आम क्रिएट करू हिस्ट्री आ हिस्ट्री प्रत्येक पेज रे हमको रिफ्लेक्शन आसे ये मन रख जो मैंने भल रिजल्ट करके गले इंस्टीट्यूट मन रखी फोटोकॉपी रही से इंस्टीट्यूट को मन रखी कि से कौ सार कथा मन पकाउं कि सो जिते से अचीवमेंट पाइले ऑटोमेटिकली अचीवर हिसाब से सक्सेसफुल कैंडिडेट हिसाब से रखागला स्मृति की मन पकागला अचीवमेंट को मन पकागला सिमिलर वे रे मन रख जदि स्टीव जॉब कंप्यूटर सेक्टर रे किसी सेमते डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव न करि थांदे आमे कहीं वर्तमान डे टू डे लाइफ रे गोटा लेसन कोर्स तांको पई करथांदे तेणु जो मैंने हिस्ट्री क्रिएट करती दे आर जेन्युइन दे आर जेनेरिक दे आर जेनियस टू बी रिमेम्बर्ड बाय द जेन्युइन फॉलोअर्स so remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose जदि गोटे लोक जीवन काल भितर भाव जे प्रकृत में मरीजी अल्प दिन भितर मोर आउ किसी काम कर अधिकांश लोग कहते आम आते दिन बचू मरीजा कि मन रखा दरकार आमर लास्ट डे पूर्व दिन आम इम्पोर्टाट डे से दिन में आम किसी प्रेडिकामेंट या and that is going to happen in case of Steve Jobs. So you are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. Diagnosed in the sense tested. I had a scan at 7:30 in the morning and it clearly showed a tumor on my pancreas. मो pancreas रे कोन जना पड़िला गोटे ट्यूमर रही that means I was diagnosed with cancer according to Steve Jobs. I did not know what what a pancreas is. Pancreas रे कोन पिले actually follow up हुए pancreas what is the importance
पैंक्रियास हमको कोठे सपोर्ट करी थाए digestive system as well as you must be knowing about to preventive diabetes. Diabetes पे हमें कौन नहीं था वो insulin. Pancreas को सबसे follow पे increase हमारा insulin. Okay students. So I did not even know what a pancreas was. The doctor told me this was almost certainly a type of a cancer that is incurable. Means not curable. The pancreas cancer it is incurable. The doctor told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. जो माने कैंसर पेशेंट था प्रत्येक दिन गोटे गोटे दिन हूँ एक्चुअली इंपोर्टाट तेणु जो स्टीव जॉब को जना पड़ा पैंक्रियास रे कैंसर होती तेणुक भाविले मुझे जो इनिशिएटिव नहीं कंप्लीट करी तो कहीं 6 मंथ रोचे टार्गेट टू एक्चुअली बी लिव आउट 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is a doctor's code for prepare to die. डॉक्टर कहले 3 ରୁ 6 मंथ भीतर आपनकर लास्टिंग ता भीतर आपन जदी किछि अछि परफॉर्मेंस करिवा पई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ऊपर किबा गोटे किछि इनोवेटिव आईडिया देबे वर्ल्ड कम्युनिटी के ताले प्रोग्रेसिव वे जे परफॉर्मेंस करंतु काना बेसी दिन आपन मानकर समय नाही. So students, it means to try to tell your kids everything you thought you would have the next 10 years to tell them just in just a few months. जोटा 10 years रे तमे कंप्लीट करबा कथा ताले किछि few months भीतर सेटा को कंप्लीट करो. It means to make sure everything is a button up so that it will be easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. जेते शीघ्र जो टास्क तम पे परफॉर्मेंस करिया पे दिया जाय कि you would have to complete it, and thereafter because within a short span of 3 to 6 months you must have to say goodbye to your family members. I lived with that diagnosis all day. Later that evening I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. It is relating to surgery. किभली आकार needle रे pancreas रु कोन कला tumor रु किछि ना किछि पार्ट अणा गला आ तको biopsy करा गला. I was sedated. That means I was calmed. But my wife who was there told me that when they viewed the cells under the microscope, the doctor started crying because it turned out to be a very rare form of a pancreatic cancer that is curable with surgery. I had the surgery and I am fine now. That is the expectation. समस्ते कहले एटा इनक्यूरेबल बट डायग्नोसिस परे जणा पड़ी गला बायोप्सी परे एटा ऑपरेशन द्वारा बा सर्जरी द्वारा क्यूरेबल हे परिबो. I had the surgery, then more surgery करा जायतिला, and I am fine now. Try to understand the meaning here. This was the closest I have been to facing death, and I hope it is the closest I get for a few more decades. तेणु ये केते decade पर्यंत मो मन भीतर भी रहिला. Having lived through it, I can now say this to you with a bit more certainly than when death was a useful but purely intellectual concept. आमे सब जन्म ग्रहण करछे मरी गेले हमर सब कंप्लीट हे गेला तार माने नाही. मो भी बहुत थोर तुमको कहि रिलेटिंग टू स्वामी विवेकानंद 39 ईयर रे एक्सपायर कले किंतु वर्ल्ड कम्युनिटी रे रेपुटेड जते इंडस्ट्रियल 39 कंट्रीज रे तांकर प्रोटोटाइप को पूजा करा जाय. सब लोक माने तांकर होतली वेल विशर कारण से थिले कोन हमर पिले कांसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म गोटे न्यू ऑर्डर देले रिलेटिंग टू हिंदू रिलीजन. No one wants to die, even who want to go to heaven don't want to die to go there, and yet death is the destination we all share. पिले बहुत लोक मरिबा को भय करंती. इट इज रियल एंड जेन्युइन किंतु बहुत लोक कहते हमें स्वर्गपुर को जेबु किंतु मरिबुनी. ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग हियर. नो वन हैज एवर एस्केप्ड इट and that is as it should be because death is very likely the single best invention of a life. आम जीवन काल भीतर मन रख पिले आम प्रेडिकामेंट करवा जिते दिन बंचुवा आम से दिन गोटे गोटे एज बा डेथ कमी कमी आम जीवन काल वी आर गेटिंग ओल्डर सो वी मस्ट हैव टू बी स्मार्ट टू परफॉर्म आवर स्मार्टिंग ड्यूटीज विदिन द सिनेरियो ऑफ स्मार्टनेस. इट इज लाइफ चेंज एजेंट. इट क्लियर्स आउट द ओल्ड टू मेक अ वे फॉर द न्यू. प्रत्येक एजेड पर्सनालिटी भाविबा दरकार मोर जदी अधिका समय बंचिबार नाही ताले मोर फ्यूचर जनरेशन मानक पई मु गोटे किछि न्यू कांसेप्ट देकरी जीबी. राइट नाउ
The new is you. ତମେ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। But somebody not too long now from now you will gradually become the old and be cleared away. Sorry to be so dramatic, but it is quite true. प्रत्येक पिला जी जो फिलोसफी हिसाब रे आछंती जो फिलोसोफर अछंती गोटे गोटे मास्टर मान को सब बेले टीचर माने डिनाई करिसेंती न्यू कांसेप्ट रे। न्यू कांसेप्ट रे जे जो कांसेप्ट इनोवेटर अछंती ताको डिनाई करछन तांकर स्टूडेंट माने माने पर्टिकुलरली तांकर डिसिप्लिन माने कारण कोन न्यू मोड रे से कांसेप्ट को दैछंती। So you are the future generation, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma which is living with the results of other people thinking. Don't let the noise of others opinions drown out your own inner voice. हाँ पिले, according to Steve Jobs, your time is limited. प्रत्येक लोकंकर केबे केते दिन किए बंचिबो केही कहि परिबेनी। So don't waste it living someone else's life. तम पई जो टास्क दिया है तमे से कामटा कंप्लीट करके जाओ। तमे कहबनी मु गला परे आउ जण किए बोते जाओ कंप्लीट करबो से बड़ी होप रखनी। Don't be trapped by dogma. Dogma means traditional rules. Dogma means superstitions. कहार किए को कथारे कहि दे ताको विश्वास करनी। You ought to be man of action, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinion drown out your own inner voice. अलगा मानकर कथा को तमे सब बेले गुण गुण एके कहबा को चेष्टा करनी। ओन रो वॉइस कोन अछि, ओन रो मैजेस्टिक ऑर्डर कोन अछि, ओन रो कमांड कोन अछि तब एक्सप्रेस करो। And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Try to understand. Our personal matter, आमे जोटा परफॉर्मेंस करते that is primary to us. आम पाखे जेति की पोजीशन अछि that is primary to us. आमे कहबनी कहा पाखरु किछि बरोड कांसेप्ट आनिबा। बरोड कांसेप्ट जदि आनिबा that is secondary. आम फैमिली होछि आम पई प्राइमरी। आम निजर पाठ पढ़ा आम पई प्राइमरी। किंतु आमे जो गुडा सब बरोड कंट्री रु आइले फॉरेन कंट्री रु अब्रॉड कंट्री रु those are considered to be secondary. तेणु सेकेंडरी सेक्टर आम डिपेंड करबानी अर्थात निज बुद्धि रे आम निजे चलिबा परर बुद्धि ऊपर केबे हेले पर्यवेक्षित हेबाकू चाहिबानी। When I was young, there was an amazing publication called The Whole Earth Catalog, one type of a magazine, which was one of the Bibles of my generation. सबुठारु गोटे I mean historic maxim, holy maxim of my generation. It was created by a fellow named Stuart Branch, not far from here in Menlo Park. Menlo Park पाखरु से रहउतिले तांका नाम थिला स्टुअर्ट ब्रांड, and he brought it to life with his poetic touch. से गोटे गीत माध्यम रे कोन करथिले एटा को परिप्रकाश करिथिले। This was in the late 1960s, before personal computers and desktop publishing. Personal computer आसीबा पूर्वरु, desktop आसीबा पूर्वरु, so it was all made with typewriter. सेतेबेले सब टाइपराइटर्स द्वारा, सीजर्स द्वारा आउ पोलारॉइड द कैमरास द्वारा परफॉर्मेंस करा जाउथिला। It was sort of like Google in paperback form 1935 years before Google came along. It was idealistic and overflowing with neat tools and great notions. World over तमे जानिथिबो Google केबे आसिला 1998. वर्ल्ड ओवर रे गोटे रिवोल्यूशन आसिला। वर्तमान कौन सी क्वेश्चन रा आंसर लेफ्ट नहीं, एवरीथिंग इज गेटिंग टू बी फुलफिल्ड, and I feel it is the greatest contribution so far as IT sector or computer network system is developed. So students, it was idealistic and overflowing with neat tools and great notions. देखो जेतबे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रे डेवलपमेंट हैला, पर्टिकुलरली आमे देखिले सेतबे तांकर प्रेडिक्शन थिला स्टीव जॉब्स पर फ्यूचर जनरेशन पई। आमे जो कहूचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात आमे किछि यूज करबा हम जनरेशन रो एम्बिशन को फुलफिलमेंट पई किछि सेविंग करबा। तांकर सेतबे आउटलुक थिला एबिंति दिन आसीबो 21st सेंचुरी, जो सेंचुरी रे हमर वर्तमान देखो टोटली एगलान डिजिटल ऑर्डर। तमने जो माने सीपीएससी कोर्स रो पिला माने थिबो जानिथिबो आउ 130 इयर्स परे परे कोन हबो हम साइड रूम रे क्लासरूम हबो घरे टोटली ऑनलाइन हे जिवो। स्कूलिंग प्रोसीजर रहिबनी, कोचिंग रहिबनी, सब आज एबे भी आसी गलानी आप
आमे देख आजिकल जो आप आसला घरे बस मैक्सिमम पिला भी विदाउट कोचिंग रे पढ़ी दे पारिबे इवन जे आईएएस टॉपर होला से कहला ना जीपीटी हमर जो ये रे टोटली कोन कला कवर कला कोर्स गुडा को जहां नेट रे आसिला अपलोड कला अब मटेरियल सब पाई गला इवन बहुत गुडे भी अच्छा तुम देखो फिजिक्स वाला कथा कह सी भी अफोर्ड करुच्ची अवश्य ऑफलाइन और ऑनलाइन भीतर डिफरेंस जो 100% ऑनलाइन हो जने कौन ट्राई टू अंडरस्टैंड तो जो मैंने प्रकृति साइंटिफिक डेवलपमेंट रे थिले बर्तमान तंगर प्रेडिक्शन डे टू डे लाइफ रे फुलफिलमेंट होची ना नहीं हमर मैक्सिमम चैप्टर गुडा अवेलेबल होनी नेट रे मिल जाउनी ओके स्टूडेंट्स सो स्टीवर्ट एंड हिज टीम put out several issues of the whole earth catalog and then it was then when it had run its course they put out a final issue. It was the mid 1970s and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find hitchhiking on if you were so adventurous. Listen students, ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଦେଲେ ଅନଲୁକିଂ spirit and his team put out several issues of the whole earth catalog ଆମର ଟୋଟାଲି ଆର୍ଥ ର କାଟଲଗ ଟାକୁ ରିପ୍ଲେସमेंट କରାଗଲା ପବ୍ଲିଶ କରାଗଲା and then when it had run its course they put out a final issue final publication kale it was the mid 1970s ବେଳକୁ and I was your age ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସ୍ପିଚ ଦଉଛନ୍ତି I was of your age. On the back cover of their final issue रे कौन थिला was a photograph कौन से photograph थिला of an early morning country road ग्रामांचल रो गोटे country road बा रास्तार photograph थिला केमिति मॉडिफिकेशन पिले घटुची देखो so the kind you might find yourself hitchhiking on if we are so adventurous आमे कौन करिबा जदि कौन सी एरिया को डेवलपमेंट न करि परिबा हिचिकिंग इन द सेंस कौन आमर निजर नाही कौन सी राइडिंग गाड़ी पर गाड़ी रे आमे बसिक जीवा अनलुकर हेकरी बोथ साइड के देखि देखि जीवा ताले वर्ल्ड ओवर आमे देखिबा वर्तमान केते चेंजिंग सिनेरियो आसिलानी सो beneath it were the words stay hungry stay foolish it was their farewell message as they signed off आउ तले टिके लेखा थिला बेनेथ रे स्टे हंग्री स्टे फॉलिश जेते बेला पर्यंत तमे चाहिबनी कौन सी कथा जानिबा पई तुमको केही किछि जणैबेनी आउ समस्त आगे तमे केबे कहबन जे मु सब गुडा जानिछि बोली यू मस्ट नॉट बी सुपर ईगो यू मस्ट नॉट बी इगोसेंट्रिक you must have certain type of a submission that I have no knowledge about the particular chapter concerned then and there everything would be world up stay foolish and I have always wished that for myself सब बेले तुम मैंने जेहेतु यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट अच्छा निजक कहा आगे कहीपरि आम सब गुड़ाक नॉलेजेबल बोली आम सब गुड़ाक प्राउड रे कहबानी जे आम जानिचु बोली यू मस्ट बी सबमिटिंग इन द सेंस तमर किछि समर्पण जोग रहिबो इन ऑर्डर टू एक्वायर सर्टेन नॉलेज and now as you graduate to begin anew I wish that for you stay hungry stay foolish जेते बेले पर्यंत तमर इच्छा शक्ति थिबो कोनसी बाबदरे जानिबा पय तुमको केही ना केही किछि जणैबो जेते बेले पर्यंत तमर इच्छा शक्ति नथिबो सेते बेले पर्यंत तुमको केही जणैबेनी थैंक यू ऑल वेरी मच एटा तला रिलेटिंग टू स्टे हंग्री स्टे foolish हमरे चैप्टर स्टोरी बुक कवर बोदे नाउ अछि देखि दो पूरा कहलियो बा आउ ना किसको अछि लिसन स्टूडेंट्स आउ गोटे तुमर चैप्टर रहउची मंकीज फॉर हैं माय मते पेज नंबर
Okay, students. Thereafter, we are skipping towards my mother. Page 89. Charlie Chaplin. Listen, students. Page 89. My Mother by Charlie Chaplin. Introducing the author, Sir Charles Spencer Chaplin was born in 1889 and died in 1977. An English comic actor. What is the meaning of an English comic actor? Comic means, what is the meaning of comic? Comic mimic. Comic means comedian. जे स्टेज ऊपर कौन करते लैपटॉप का फोन क्रिएट करते मिमिक माने तांका फेस टाको एभरी मोड से माने करते एक्शन जोटा कि लोक मान भीतर लाफिंग स्पिरिट क्रिएट करे सो an English comic actor film director and composer is usually known by his stage name Charlie Chaplin janकर stage name थिला Charlie Chaplin और world famous so far as his comic direction as well as performance is concerned. He was one of the most creative and influential personalities of the silent film era. What is the meaning of a silent film era? Silent film era. Screenplay. Screen ऊपर हमर डिजिटल का प्रोजेक्टर इन फोकस रहउची किंतु परफर हमें देखिबा कोन ना स्क्रीन टा प्रोजेक्टिंग रे कोन होची हलचल होची हमें के बेले से पर्दाटा हलेनी पिले तेणु साइलेंट फिल्म एरा रे यदि हमें देखिबा चार्ली चैपलिन का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एज वेल एज इन्फ्लुएंस he used mime slapstick and other visual comedy routines and continued well into the era of the talkies तेणु जेतेबेले हमें देखिबा माइम इन द सेंस ताकर मोड ऑफ एक्शन बेले बेले हम मानक भीतर लाफ्टर क्रिएट करे स्लैपस्टिक इन द सेंस वॉइस रो जो चेंज करांती विभिन्न प्रकार स्वर एंड अदर विजुअल कॉमेडी रूटीन्स लोक मानक भीतर एंटरटेन करै परिथांती एंड कंटिन्यूड वेल इनटू द एरा ऑफ द टॉकीज थिएटर बट टॉकीज एरा रे एरा इन द सेंस एज रे ही वाज वेरी रेप्यूटेड पर्सनालिटी हैव यू सीन मूवी ऑफ चार्ली चैपलिन Chaplin is one of the greatest comedians of the silent movies. This text is an expert from his book, My Autobiography. It आसी पर तमर MCQ question, My Autobiography. I got to My Experiment with the Truth. My Experiment with the Truth, written by whom? M.K. Gandhi. My Autobiography, Charlie Chaplin. Read the following unit of the text and note how he remembers his parents. तांका पेरेंट मानक ऊपर रिफ्लेक्ट करचंदी चार्ली चैपलिन I was hardly aware of a father and don't remember him having lived with us. Hardly means rarely. Hardly और rarely पाखरे हमर adverbial कौन यूज हुए जेमते नो सुनर पाखरे ध्यान hardly पाखरे सेमते कौन लगे when hardly पाखरे when scarcely पाखरे when
So I was hardly aware of a father. बापा बोली बोली मु किछि जानि नथिले and don't remember him तांका कथा मु मने रखिनी having lived with us एवं जे कि आम सहित रहिथिले बोली she too was a vaudevillian in the sense गोटे गोटे एक्टर जे कि ऑडियंस को कौन करंती ना एंटरटेनमेंट देई थांती एक्वेट बहुत से निरीह नीरव रहिथिले brooding man brood in the sense who thinks before speaking anything else भाभी चिंते करी कोई थांती man with dark eyes mother said he looked like Napoleon Bonaparte. What is the other name? Napoleon Bonaparte, man of iron. Man of iron, Napoleon Bonaparte, the Iron Man of the world. He had a light baritone voice. What is the meaning of a baritone voice? Male tone re kahibe, female tone re bhi madhya kahi paribe. And was considered a very fine artist. But a reputed artist boli tango consider karagala. Even in those days, he earned a considerable sum of 40 pounds a week. ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି ଥିଲେ ରୋଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଥିଲେ 40 ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରେ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲେ ଦ ଟ୍ରବୁଲ ୱାଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ସି ଡ୍ରାଙ୍କ ଟୁ ମଚ୍ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ ହି ୱାଜ ଏ ଡାଉନ୍ ରାଇଟ୍ ଡ୍ରଙ୍କାର୍ଡ ପ୍ରବଳ ସେ ମଦ ପିଉଥିଲେ which mother said was the cause of their separation ମା କହୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ excess drinking is nothing but the result of a divorce ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାମା କଣ ହେଇଥିଲେ ନା ସେପାରେଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ନେଇଥିଲେ it was difficult for vaudevillians not to drink in those days ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏ ଯୋଉ କଳାକାର ଲାଇନ ବାବଦରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲାଇନ ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରନ୍ତି କୋଉଠି 10% ଲୋକ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିପାରୁନଥିବେ for alcohol was sold in all theaters ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥିଏଟର ରେ ଆଲକୋହଲ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ଅର୍ଥାତ ୱାଇନ୍ and after a performance act ଗୋଟେ ପରଫର୍ମର ଆକ୍ଟ କଲା ପରେ ପରେ he was expected to go to the theater bar theater ku jibo and drink with the customer manaka sange sodu kon karibo sufficient piibo some theaters made more profit from the bar than from the box office and a number of stars were paid large salaries not alone for their talent but because they spent most of their money at the theater bar देखो पिले आजिकली सेटा गोटे फैशन हो जाइए कौन सी म्यूजिक प्रोग्राम को गला बेलू तुम देखुव मैक्सिमम आजिकली पीक स्टेज उपर को जाऊँ इंस्ट्रुमेंटालिस्ट बहुत बढ़िया पीउछंती ओडिशार जो रेपुटेड सिंगर माने अछंते ता भितर बोधे मु कहूची डेसिमल रे पड़ी आसीबे जो माने न पियंती तेणु करी पिला हमर कहबार उद्देश्य होची टिकेट बॉक्स रे जेतिकी कलेक्शन न हुए हमर थिएटर बार रे अधिक मध्य कलेक्शन हुए owing to taking of alcohol. Thus, many an artist was ruined by drink. My father was one of them. Ruin in the sense, R-U-I-N means destroyed, spoiled. नष्ट हो जाउथिले. Drink. My father was also one of them. तांका भितर मो बापा मध्ये जणे थिले. Excess drinks करी करी के तांकर कोन हुए ना actually आसी गला family separation. She died of alcoholic excess at the age of 37 बापा तो डिवोर्स नहीं किंतु पिले 37 एज रे से एक्सपायर करी गले मदर वुड टेल स्टोरीज अबाउट हिम विथ ह्यूमर एंड सैडनेस बेले बेले बहुत खुशी मिजाज रे बापा कथा गपंती आ बहुत दुख प्रकाश भी मध्य करंती शी हैड ए वायलेंट टेम्पर व्हेन ड्रिंकिंग सी जते बेले मद पिउथिले ना हठात रागी उठुथिले वायलेंट टेम्पर इन द सेंस शॉर्ट टेम्पर and during one of his tantrums she ran up to Breton with some friends and in answer to his frantic telegram what are you up to answer at once she wired back balls parties and picnics darlings जेतेबेले से सांग मानक संगे जाउतले विभिन्न प्रकार शूटिंग रे सेतेबेले कोन करूथिले पिले तांकर गोटे चाइल्डिश आउटब्रट आसला पिलाड़िया भाया कहते मामा जिते पचारुले जाइच प्रोग्राम रे कौन करुच बॉल्स पार्टीज
पिकनिक्स डार्लिंग आम ये खाली एंजॉयमेंट करी चली विभिन्न प्रकार जो रही थिएटरिंग प्रोग्राम्स विभिन्न प्रकार एंटरटेनमेंट प्रोग्राम रही जो खाती एक्सेसिवली पियंती से टाइम कटाऊ डार्लिंग्स What degree of feeling she had for my father, I never knew. But whenever she spoke of him, it was without bitterness. से जेतेबेले बापांग बाबदरे किछि कोहंते तांको भितर केमति किछि नथिला जेलसी तांकर सेमति किछि खराब मनोवृत्ति नथिला बिटरनेस नथिला which makes me suspect she was too objective to have been deeply in love. तमाने एजाय मध्ये से बापांग विरुद्धरे किछि कहउनांती माने बापांग से बदे बहुत लाइक करूथिले. Sometimes she would give a sympathetic account of him. बेले बेले से बापांकर गोटे गोटे इलुस्ट्रेशन बा एग्जांपल दउथिले. And at other times talk of his drunkenness and violence. अलगा बेले बापांकर जो एक्सेसिव ड्रिंक नउथिले ता बाबतरे मते कोन करंती कमेंट करंती आ तांका वायलेंस मूड बापांकर मध्ये कोन करंती विविडली एक्सप्लेन करंती. In later years whenever angry with me मु जेतेबेले बड़ हे गेली सेतेबेले मो ऊपर रागंती कोन कोंती पिले she would ruefully say से रागिकरी regretfully sadly मते कहंती you will finish up the gutter like your father. तो बापा मरी चंती gutter in the sense जो खात का गात बापा जो गातरे पड़ी मरचन तू दिने सेही गातरे मरिबो अर्थात you will enjoy yourself the strategic position or what the situation happened to your father. तो बापांग बळी दिन अनकॉन्शियसनेस रे रहइबो आ सेमती पड़ी मरिबो. So students, what other facts besides drink were involved I don't know, but a year after my birth my parents were separated. What other facts besides drink? पीबा सहित मद पीबा सहित आउ कोन फैक्टर थिला मु जानेनी. I don't know, but a year after गोटे वर्ष परे of my birth मो जन्मर गोटे वर्ष परे my parents separated. मो parents separated हे जाइथिले. Mother did not seek alimony. What is the meaning of alimony? Compensation after divorce. Divorce नेला परे जो compensation demand करथांती सेटा होची alimony. So students, being a star in her own rights, earning 25 pounds a week. मो मां कोन करथिले गोटे स्टार थिले आउ earning करथिले 25 pounds a week. गोटे week रे 25 pounds. She was well able to support herself. सेतेबेले मामा कोन करथिले निजको निजे सपोर्ट दे पारुथिले निजे चली पारुथिले and her children. Only when ill fortune befell जेतेबेले दुर्भाग्य पड़िला her she seek relief, otherwise she would never have taken legal steps. मामा केबेले डिमांड करि नथिले कारण डिवोर्स परे परे साधारणतः वेस्टर्न कंट्री हो इंडियन कंट्री हो यूरोपियन कंट्री हो जोटी तमे को समस्त डिमांड करंती कंपेंसेशन जेतु मामांकर अर्निंग ता भलो थिला आज स्टार तनु से मध्ये डिमांड करने थिले किछि कंपेंसेशन किंतु जेतेबेले तांकर प्रॉब्लम किछि आसिला रिलेटिंग टू किछि हर वॉइस एट द टाइम सर्टेन लीगल स्टेप्स पाई मध्ये से केबे पछमुचा दबा को चाहि नथिले. She had been having trouble with her voice. मामांकर voice हैला trouble रे किछि प्रॉब्लम आसिला. It was never strong and the slightest cold brought on laryngitis which lasted for 2 weeks, for weeks, but she was obliged to keep working so that her voice grew progressively worse. You must be knowing students जेतेबेले आमे कोन जो माने सिंगर थांती से सब बेले तांको वॉइस ऊपर कोन करंती स्ट्रेस दियंती आउ विशेष करी जेतेबेले मामांकर टिके कोनला वॉइस रो प्रॉब्लम आसिला रिलेटिंग टू हमर जो इनहाले एक्सहाले सिस्टम हमर जो वॉइस रो कोर्स हे गला जोटा हमें कहउचे inaudible for the audience so far as music program is concerned. She could not rely on it. She have music ऊपर depend करलेनी singing ऊपर. In the middle of singing, it would crack or suddenly disappear into a whisper, and the audience would laugh and start booing. देखो पिले मामा गीत गाउथिबे according to the version of चार्ली चैपलिन स्टेज ऊपर मझिरे कोन हबो मामांकर वॉइस ता अलगा प्रकार क्रैक हे जिवो जे जो टोन रे गाउची जेतबे क्रैक हे जिवो टोटली स्लो हे जिवो तणु ऑडियंस माने कोन करिवे विभिन्न प्रकार थट्टा तमाशा करिवे विभिन्न प्रकार एनिमल मानकर बढिया चित्कार करिकरी कोन करिवे ना स्टेज प्रोग्राम टा को हरासमेंट करंती. The worry of it implied her health. से तो इनकम करी परलेनी तांको पर आउ किछि ट्रेजिक आसिला
and made her a nervous wreck. से तांकर जो कार्यक्रम करुतिले से कार्यक्रम ऊपर टिके नर्वसनेस आसला अर्थात स्टेज प्रोग्राम आ करि परले नाही. As a consequence, that means as a result, her theatrical engagements fell off. The theatrical रे जो काम करुतिले सेटा fell off in the sense it was reduced until they were practically nil. एवं एमिति गोटे सिचुएशन आसिला टोटली 100% nil यार को गति गला. रेजल्ट घर अच्छी देले कपिटा मां अच्छा फिलिप रेजल्ट वर्स पुट बाय रेजल्ट वर पुट बाय समय पुट बाय put down Ashish, put down, put off Raghu, put off, put on, put on. Don't look the copy and thereafter try to worship yourself. It doesn't matter, students. Put out, extinguish, then put up, up. Put up with, turn down, turn down, turn out, run into, run over, what is the rule of a conditional? First rule, zero conditional. What is the rule implemented therein? Simple present. First क्या है first go receive. Scientific truth है माने simple present ଥିଲେ simple present रहे पर reversal रहे गोटे प्रकार रहे condition आ गोटे प्रकार रहे तार cause statement. अच्छा rule 1 कौन? What is the rule 1 relating to conditional clause? Simple present, simple future. Rule 1 means open conditional. If one part of the sentence is in simple present, other part must be restated in simple future. Rule 2, hypothetical. What is the rule? If one part of the sentence is in simple past, the other verb must be kept in past. सब rule गुड़ा dictate करा है. Last rule, that is imaginative. What is the rule of imaginative? गोटे साइड रे जदि r plus v3 रहला अन्य पट रहबा would have plus v3. Narration the first rule कौन? What is the first rule relating to narration? Relating to narration, first rule अनुपना कौन प्रेजेंट सिंबल narration जतले हमें परफॉर्म करू narration फॉर्म कला बेले हमें प्रकृति रे का ऊपर बेसी फोकस करथाउ शुभ पापर में बेसी फोकस करू narration रे रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर रिपोर्टिंग वर्ब जदि प्रेजेंट किबा फ्यूचर रे थिबे
रिपोर्टेड स्पीच रो वर्ब किसी चेंज होबनी thereafter जदि past tense रे थिबो कोन हबो चेंज हबो अच्छा past perfect थिले कोन हबो past perfect रो रूल अनुसार कोन हबो past perfect progressive थिले कोन हबो जदि verb ता हमर सिंपल past रे थिबो रिपोर्टिंग वर्ब जदि सिंपल पास्ट रे रहिला रिपोर्टेड स्पीच रे जदि सिंपल पास्ट सिंपल अछि सेटा कोन हबो पास्ट परफेक्ट यदि पास्ट परफेक्ट थिबो नो चेंज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव थिबो नो चेंज यूनिवर्सल ट्रुथ थिबो नो चेंज शाल थिले शुड विल थिले वुड मे थिले माइट कैन थिले कुड मस्ट थिले मस्ट रहइबो नले हैव टू मस्ट थिले मस्ट रहइबो किबा हैव टू यूज होबो हैला कि अच्छा इंपेरेटिव जदि हमें देखिबा इंपेरेटिव रा फॉर्मल कुह जदि हमर माय फादर सेड वर्क हार्ड माय फादर सेड वर्क हार्ड ता को सेंटेंस रे रहउची इंपेरेटिव सेंटेंस रे रिपोर्टिव वर्ब रे कोन यूज करा जिवो एडवाइस अच्छा द बॉस सेड गेट आउट टू हिज सर्वेंट बॉस जतले कहबे ऑर्डर्स हैला कि he said thank you he thanked me he said welcome he welcomed me he said good morning he wished me a good morning जते ऑप्टेटिव सेंटेंस थिबा सब गुडा का विश प्रे हमर जोटा करा जाय कोन की पर्टिकुलरली हमें इंपेरेटिव फॉर्मेट रे यूज करिबा रूल गुडा पढिनियो सबले ग्रामेटिकल रूल गुडा रेगुलर प्रैक्टिस करो समय तो कॉपी आइलो इंग्लिश कॉपीटा जोटा लिखि सब ए रूल गुडा सब ग्रामर जो लिखा दिला कासे कॉपी करो नाही टोटली कवर करी आर क्लास पे रूल गुडा जदि न हे तू 11 टा को मास्टर ऊपर लिखि दिन को हैला तू कोन पे रूल करी आता कोडे गलानी रूल गुडा डायरेक्शन को एग्जाम में पढ़ियो तो कोन आके एमएस काटा बोल को जितने भी जाकर तू मैंने एक्चुअली यू आर कैपेबल टू सेक्योर मोर देन 90% in English and not something which is samikya you both have to correspond I am here from 11 to 3 o'clock don't read normally it would hamper your future career you see science is troublesome at the present scenario most of the students are entering into high tech medical by paying 20 lakh rupees but this year including the above 3 students entered into ACG going to their efficiency
and most of them are the students of the board school. So you are capable. Don't actually try to neglect it. You have almost all the CPC, perhaps you have the book of Renan Martin, English grammar. Just go through it. And if you have any doubt, you must ask me.